Welcome to the fourth episode of Palette of Profit, and today we will see some examples of actual charts of how to trade inside candle. And as I've mentioned earlier also in my previous episodes, please watch the earlier episodes before watching this. It will give you a better understanding. So now let's move on to the charts. Chaliye, let's mark the swings and the inside candle. So this goes up, swing high, swing low. यहाँ पे हमें inside candle मिला. Then swing high, swing low, swing high, sort of sideways. This is where we don't take any trades and we wait for the breakout. Let's move forward. Swing high, swing low, swing high. Then you will notice inside candle on the top. Sideways, swing low, swing high, swing low, swing high. ये बीच में एक inside candle बना है, swing low. Let's move forward. It goes up, goes down, swing low, swing high, swing low, and so on and so forth. और आप देखेंगे कि inside candles, when they are forming in between the swings, is where we avoid them, and we try and capture the inside candle when they form at the swing low. And then the market was sort of sideways. इस जोन में हम avoid करते हैं trade करना. This is the period when you need to have the discipline to get bored and not take any trades. And the stock sort of keeps rising. The 200 moving average is also rising, and then you'll start noticing कि अब price is not moving in a very clean and orderly fashion the way it was moving when it was in a clean uptrend. I think जब ऐसा stage आता है, then you have to get very careful and try to book your positions, or at least don't take any new trades. अगर आप इस जोन को देखें तो sort of after this big trend up, the price starts making these swings, and these swings are now ending in a classic lower or a falling trend. And here, if you notice, it's sort of the higher highs are not making really higher highs, and lower lows are also now starting to form. So this is a zone which is a no trade zone. Now let's move forward, and the price sort of breaks the 200 moving average, and when the price makes this move, we do not initiate any buy trades. Let's see how the price behaves. You can see it's sort of making further swings, but the swings are now forming a pattern which is not
trade worthy? Definitely, because it's below the 200 moving average, and the minute it breaks out of the 200 moving average, it goes down, forms this swing, and then forms this swing, and then let's see what will happen. But आप यहाँ पे notice करेंगे कि this blue candle, this is our inside candle. It's forming on a good support on a swing low, very close to the 200 moving average, and then it sort of gives a good violent move. तो कुछ लोगों को फोमो भी हो सकता है यहाँ पे कि ये जो लोअर एरिया में है ये तो हमने मिस कर दिया, प्राइस तो बहुत ऊपर जा चुका है. I mean, if I see from this point to this point, 23% प्राइस ऊपर जा चुका है. क्या अब हम इसे बाई करें? So that's where our inside candle comes in and a swing trade comes into the picture. हमें ये तो establish हो गया कि प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. 200 मूविंग एवरेज भी राइजिंग है. So and lower higher highs and higher lows भी बन रहे हैं. So whenever it makes another swing, we may get an opportunity to enter the trade. So let's see. ये आपसे मिस हो गया, यहाँ पे गैप अप हो गया, the price went up, formed a swing low, and यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना. अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि अगर ये इनसाइड कैंडल के ऊपर अगर प्राइस गया तो हम बाई करेंगे, और इसके नीचे रहा तो एनीवेज वो ट्रेड इनिशिएट ही नहीं होगा, और इसके कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे. एंड वी कैन पुट एनी टारगेट. वी कैन पुट लेट्स से 1:3 का ट्रेड कर सकते हैं, 1:4 का कर सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, एंड दैट्स वेयर इट सॉर्ट ऑफ फॉर्म्स, एंड यू गेट एन एग्जिट एट द नेक्स्ट स्विंग हाई. लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कैन कंटिन्यू विद द ट्रेंड and ride it out. Momentum traders, swing traders जो 4 या 5 दिन तक ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पे आफ्टर दे हैव अ 1:4 and then exit the trade. And you will notice you will get multiple trades. Like अब यहाँ पे यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्विंग्स बना रहा है, and swing lows are still forming higher lows, so it is a confirmation कि trade is in uptrend. And at this swing we have another inside candle. We can initiate a trade here कि भैया जब इसके ऊपर जाएगा तो I will enter the trade, and इसके नीचे रहेगा तो I will exit the trade. So the first day we did not get an entry, the second day we got an entry, and it again gave you a good, like I would target 1:4 again, and it sort of gives us a 1:4 somewhere here, and uske baad it sort of starts going down. So yes, you did not get this move, but you actually captured two very strong moves, and through swing trades we try and capture these moves जो 2 से 5 या शायद 10 दिन तक चले, and then we sort of exit and look for a new trade in a new stock or in the same stock when it forms another swing low in an uptrend. Let's look for more trades in this stock. Price move कर रहा है, and we get a inside candle here, and it's still in an uptrend, so we initiate a buy position. यहाँ पे लगा दिया, ये stop loss लगा दिया, and we put a target of let's say 1:4 again, and let's see if we get our entry. The next day again it made an inside candle.
ये आपका स्टॉक एंड गैप अप खुला उस दिन एंड देन इट्स सॉर्ट ऑफ मे बी आपका बाई का ट्रिगर भी हुआ होगा एंड देन उसी दिन स्टॉप लॉस भी लग गया. सो या वी आर आउट ऑफ दिस ट्रेड. बट अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आपका स्टॉप लॉस रहा है वो मात्र 5 पॉइंट का रहा है, 5 या 6 पॉइंट का. whereas you have made 22 points here and 25 points here. That's almost 50 points that you have captured. And in your third trade you sort of gave up 5 points. So approximately in this stock you captured close to 40 points. Idea is to lose very small amount when you are wrong, but to make a huge profit when you are right. And that's precisely what you see in this setup. Stop loss तो लगेंगे ही, and that's why we need to have stop losses which are very tight, very small, जैसे कि इस केस में हुआ. And then yeah, price is now going down. अगर आपने stop loss नहीं लगाया होता तो आप देख सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट जितना भी आपने कमाया वो सारा ऑलमोस्ट गवा दिया होता. And that's why trading with stop loss is super critical. And you can notice कि the stock never recovered. It kept going down. Imagine the loss if you had not put a stop loss. चलिए, let's look at another example. इसको हमने सिमुलेट किया है. Every candle represents one day. प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है. लेट्स सी. इनसाइड कैंडल बनाया है इसने यहाँ पे. आई थिंक आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया एंड वी सॉर्ट ऑफ पुट अ 1:4 एंड लेट्स सी क्या होता है, whether we are actually getting or hitting our target. आपसे अगर ये वाला मिस हो गया तो फिर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी एक स्विंग छोटा सा बना है और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है. आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे. लेट्स सी. और तकरीबन आपको यहाँ पर आपका टारगेट 1:4 मिल गया. सो दिस इज वन ट्रेड. Let's keep moving forward and we notice this swing and this is the inside candle. We can initiate a buy trade here and let's see क्या होता है. ये आपको टारगेट मिला है यहाँ पर. हम थिंक वी कैन गो फॉर अ मोर बिगर टारगेट. 1:4 या 1:3 मिनिमम हम टारगेट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद 1:3 एंड सी क्या होता है. So the price is still going up unless where you hit your 1:3. Let's see, we can still hold. 1:3 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. लाइक अगर इसके नीचे गया प्राइस तो हम एग्जिट हो जाएंगे, बट अदरवाइज विल कीप राइडिंग इट. लेट्स सी. प्राइस इज गोइंग अप. लेट्स मूव इट टू 1:4. 1:4 भी मिल गया. चलिए बढ़िया है. लेट्स मूव द स्टॉप लॉस टू 1:4. अब 1:4 के आसपास शायद यहाँ पे आप बाहर हो जाएंगे, बट अगर आपने आपने कहा था कि 1:3 पे मैं रखता हूँ, 1:3 के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊँ. अदरवाइज यू कैन कीप होल्डिंग इट एंड कीप मूविंग.
आप यहाँ पे आप एग्जिट हो गए इस ट्रेड से. So this is one good example of how we can trade inside candle in swing trades. चलिए let's continue. What's कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या हमें यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल मिला, इसके ऊपर हमने लगा दिया कि भैया इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो हम बाई करेंगे और इसके नीचे गया तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे. हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 ट्रेड कर लिए हैं एंड वी हैव अराउंड 117 पॉइंट्स एंड 158 पॉइंट्स. सो 117 एंड 140 पॉइंट्स, 158 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 160. एंड अगर ये ट्रेड नहीं चला तो वी विल लूज अराउंड 40 पॉइंट्स. चलिए देखते हैं. एंड विल पुट अ टारगेट ऑफ 1:4 अगेन. लेट्स सी क्या होता है. डू वी मीट और वी काइंड ऑफ. और यहाँ पे आपको आपका टारगेट मिल गया 1:4. कैप्चर्ड अनदर 160 पॉइंट्स इन दिस. इज प्रीटी गुड. और आगे कोई ट्रेड मिलता है तो हम उसके हिसाब से वी विल प्लान. आप देखेंगे यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स बन रहे हैं, बट these are not really good examples of swing. These are actually not swings. So do we trade these? We don't trade these. And that is why I had mentioned earlier कि अगर आपको इसमें perfection हासिल करना है, you want to become perfect in trading inside candles and swing trades, you have to spend a lot of time studying a lot of charts, identifying all the swings, the swing highs and the swing lows, identify whether the stock is in an uptrend or is it in sideways or it's in a downtrend. And then whenever the opportunity appears of an inside candle forming, when the price makes a swing low, we buy above the high of this candle. Let's see इस स्टॉक में क्या होता है आगे. अभी तक तो हमारे पास कोई अच्छा स्विंग नहीं मिला है एंड आई थिंक अब थोड़ा स्ट्रक्चर भी इसका बिगड़ने लगा है. क्या आप इनमें से किसी भी इनसाइड कैंडल में ट्रेड करेंगे? फॉर एग्जांपल ये वाला. आफ्टर दिस मूव, when it forms such a big, this is a shooting star and this is such a big red candle, I think it's a pretty strong indicator कि भैया अगर आप अब ट्रेड में हैं तो शायद अब टाइम आ गया है कि आप इस ट्रेड से निकल जाएं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे कि अब इसके नीचे अगर प्राइस गया तो we will exit the trade. एंड इट सॉर्ट ऑफ गिव्स यू अ गुड इंडिकेशन कि चलिए यहाँ तक आप गए, इस दिन आप अगर आपने ट्रेड होल्ड किया हुआ है तो इस दिन आप बाहर हो जाएंगे. यू विल कैप्चर अ गुड मूव. एंड देन व्हेन इट्स फॉर्मिंग दिस लोअर हाइज, वुड यू ट्रेड दीज इनसाइड कैंडल्स? till it start forming a confirmed swing. So अभी तक तो हमें नहीं मिला है, but we are happy. We got pretty good move which we have captured. We don't have any confirmed setup to trade another and it keeps moving and then we still don't have any trade and it's good. We can look at this.
इसके ऊपर हम बाई करेंगे, इसका यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे एंड देन नेक्स्ट डे आपको एंट्री मिल गई है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये स्टॉप लॉस सेट हो गया यहाँ पे. 1:3 तक तो आपको मिल ही जाता है इसमें, और उसके बाद हम वैसे भी ट्रेल करते हैं. And then we start waiting for the next swing to happen. In the next episode, I will share some of my failures, especially my failure in futures trading and how I came out of it.